हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? मस्त। चलिए, let's start organic chemistry, the complete reactions. How the examiner is going to ask the questions. See, students, if the examiner is asking questions based on conversions, means linked on chapters. So students को लगता है how to link the chapters. Very tough question, and students find this type of questions very tough. But now these questions will not remain tough. See, examiner is giving how to convert this into that must be in both syllables. But I am teaching for three things: IIT, NEET, as well as board exam. So, for example, if the board examination is going to ask question, how do you convert benzamide into aniline? So, benzamide reacts with Br2KOH, you will get aniline. But if IIT is going to ask or NEET is going to ask question, benzamide is reacting with Br2KOH gives A. A reacts with NaNO2 dilute HCl gives B, and B reacts with Cu2Cl2 HCl gives C or whatever D, and that on Dawes process gives E. What is E? So that student says, oh my God. But कुछ ऐसा नहीं रहेगा तब। चलिए स्टार्ट करते हैं। मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। Let's see, students. So let's start with our favorite benzene. But मेरा नाम H.S.P sir, आपका प्यारा H.S.P sir, right? Okay, let's start with benzene. So suppose we are provided with benzene. So let me draw over here benzene, our favorite benzene. Hey, benzene, कैसे हो? How are you? I'm fine. Okay, benzene is fine. So now suppose benzene is to be converted into toluene. How to convert into toluene? See, this is your toluene. Hey, how to write toluene? This is your toluene. Now, how can you convert this benzene into toluene? See, friends, we all know that Friedel-Crafts alkylation. So what to do in that? Methyl chloride plus anhydrous what? AlCl3. This is toluene. This is your toluene. See, toluene. So the name of this reaction is Friedel-Crafts alkylation, FCA. What do you call it? FCA, Friedel-Crafts alkylation. And this is an example of ESR, electrophilic substitution reaction. ESR, electrophilic substitution reaction. Now, if the examiner is asking how to convert this toluene into benzyl chloride, or directly he is giving benzene to benzyl chloride. So first benzene to toluene and toluene to benzyl chloride. Let me tell you how to convert into benzyl chloride. See, this is your benzyl chloride. What? Benzyl. Let me write. Benzyl chloride. So how will you convert toluene to benzyl chloride? See, friends, Cl2 H nu. This is an example of free radical substitution reaction, that is FR. SR, free radical substitution reaction. Now, if the examiner is asking what will happen if benzyl chloride is reacted with aqueous KOH. So see, let us sit down. Okay, see.
So what happened? This benzyl chloride was treated with KOH aqueous. So this is an example of nucleophilic substitution reaction. NSR, nucleophilic substitution reaction took place. Now this benzyl alcohol is 1 degree alcohol और इस पे अगर mild oxidizing agent, the best known mild oxidizing agent is PCC. PCC, pyridinium chlorochromate. It's given in your NCERT. This is best MOA. MOA means mild oxidizing agent. PCC is an equimolar mixture of pyridine, HCl plus CrO3. This PCC will convert this benzyl alcohol into benzaldehyde. What? Benzaldehyde. So this is our favorite benzaldehyde. पहचान लीजिए, देख लीजिए, हमारा प्यारा सा benzaldehyde है. लिख देता हूं नाम. हाय रे मेरे benzaldehyde, अब तेरा क्या होगा? सरकार मैंने नमक खाया, ऐसा कोई डायलॉग नहीं मारेंगे, राइट? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो जाए, किससे हो जाए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देखिए SOA stands for strong oxidizing agent. इसके एग्जाम्पल हैं KMnO4 in acidic medium or K2Cr2O7 in acidic medium or concentrated HNO3. Either of these you can use, right? All these are the examples of what? SOA. Are you getting my point, students? Very good. So aldehyde will convert. See, Mahanta of PCC. PCC says, I will convert alcohol to aldehyde only. I will not further oxidize aldehyde. That is the best thing of this PCC. PCC best yield देता है. Best yield देता है aldehyde की. Best yield देता है. वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं ये वाला कन्वर्जन इसमें करने के, बट बेस्ट yield PCC इसलिए सबका फेवरेट है. बट अगर आप aldehyde पे इनमें से कोई डाल दोगे या अल्कोहल पे इनमें से SOA कोई डाल देते तो डायरेक्ट आपको एसिड मिलता, बेंजोइक एसिड. व्हाट यू गेट? बेंजोइक एसिड. Now see, this is your benzoic acid. Now can you see, this is your benzoic acid. Are you getting that point, students? This is your benzoic acid. Everyone is getting? Now this acid on reaction with ammonia. Are you getting that point? This acid, let me see, students. एक connectivity कर देता हूँ, right, students? Okay, students. Okay. Now see, students. This benzoic acid on reaction with ammonia.
Ammonia is a base. Ammonia is a base and benzoic acid is acid. Acid कहता है ओ अमोनिया तुम मेरे सामने आ गए, मैं प्रोटॉन रिलीज करूंगा और वो प्रोटॉन तुमको बर्बाद कर देगा. ओके अच्छा हाँ, तो इसका प्रोटॉन इस पर जाएगा, ये अमोनियम बन जाएगा और ये बेंजोएट बन जाएगा. बेंजोएट एक जैसे इंसान के प्राण निकल जाते हैं नाम से पहले लेट लगा देते हैं, और एसिड कहते हैं हम नाम के बाद में एक लगाएंगे. बेंजोइक एसिड बेंजोएट, एसिटिक एसिड एसिटेट, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलेट. ओके नो प्रॉब्लम. सो सी so you got salt, ammonium benzoate, ammonium benzoate. And the reaction is known as acid-base neutralization, ABN. Acid-base neutralization, ABN. Now this is a salt. This is a salt. और salt को ब्रह्मा जी से वरदान मिला, जब तक कोई आग नहीं लगाएगा तब तक कुछ नहीं होगा. So let me put आग means heat. On strongly heating, water will eliminate out. हमारे को पानी निकालना है. And this is very well known compound known as benzamide. Why I am telling you again and again the names. Names are very very important, and these are the journal names. 1989 में IUPAC भी बन गया, but we should know these names, otherwise we won't be able to do anything right. It's very good. Benzamide. So नाम तो लिखो, इतना important है तो लिखो भी. Okay बेटा. बेंजामाइड की बहुत ही वेल नोन रिएक्शन होती है स्ट्रेंथ्स, उसका नाम होता है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन. सर ये हैप्पी बर्थडे क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. Br2KOH or KOBr, cobra लग रहा है, cobra. Okay, no problem. तो देखिए what you get strings. That was 1 degree amide, and you got 1 degree amine, that is aniline. Remember that 1 carbon is lost, shortening of the chain by 1 carbon. एक कार्बन कम का 1 डिग्री अमीन मिला है. फ्रेंड्स याद रखिएगा. और नाम क्या है रिएक्शन का? नाम जान लो, हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे मतलब हॉफमैन. प्रो, हे प्रो, मा Mide. Degradation. Why degradation? 1 carbon got decrease in the parent chain. Right? Right. इसका गाना भी गाता हूँ जब पूरी डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ. प्राइमरी अमाइड से कोबरा रिएक्ट करवा के, कोबरा कोबरा KOBr इन दोनों से मिला है. प्राइमरी अमाइड से कोबरा रिएक्ट करवा के लाई प्राइमरी अमीन एक कार्बन चुरा के. एक कार्बन चुरा के मतलब एक कार्बन गायब हो गया, CO गायब हो गया. देखिए CO got decreased, गायब हो गया. सब गाओ मेरे साथ. Let's drop the beat. प्राइमरी अमाइड से
कोबरा रिएक्टर बाके लाई प्राइमरी अमीन एक कदम चुरा के आगे ब्रोमाइड पीछे मेरे नाइट्रीन। चलिए गाना बाद में गाएंगे क्योंकि वो मिचेल स्विन का गाना है, लेकिन अभी इतना याद रखते हैं कि कोई भी 1 डिग्री अमाइड हो, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो 1 डिग्री अमीन देगा, राइट? क्या Now, if the examiner is asking how to convert this benzene to aniline, तो क्या हम इतना चक्कर काट के जाएंगे? No, students. What do you do? See. Do the benzene's nitration. Nitration. How do you do the nitration? See, students. Concentrated HNO3, concentrated H2SO4 करेंगे हम नाइट्रेशन। वैसे तो होते हैं दोनों एसिड, लेकिन यहाँ पर HNO3 एक्ट एज ए बेस, याद रखिएगा, एक्ट एज बेस, and this is acting as acid. Okay, नाइट्रोबेंजीन का कर दो रिडक्शन। Tin or iron HCl. So this roundabout got completed. Hooray! Congratulations. जब आप याद करेंगे तो भी ऐसे ही याद करेंगे। एक बार में अगर आपको याद नहीं होता है, twice in the morning, get up early in the morning and think about whether it's your brain or not. If not in your brain, then once again do it. जब तक ये ब्रेन में रिटेन नहीं रह जाए तब तक आगे का काम नहीं करना। मॉर्निंग में रात को पढ़ के सुबह देखो आया कि नहीं आया। ओके, सी जब ये पूरा हो जाए और भुलाए ना भूलें। एक और बात है, अगर नहीं याद करना तो मत याद करिए, भुलाने की कोशिश करिए, जितना भुलाए तुमको तुम उतना याद आए। खैर एनीवे, जब ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो सी स्टूडेंट्स, अगर आपने डायरेक्ट इस बेंजीन से बेंजोल्डिहाइड बनाना है, बेंजीन से बेंजोल्डिहाइड सिंगल स्टेप रिएक्शन, मानो सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो सी स्टूडेंट्स, हाय यहां से वहां फ्लाइट पकड़ के पहुंचे, फ्लाइट फ्लाइट। सी फ्लाइट कौन सी है? देखो नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे गटर में जा रहा हो। Guttered man कोच रिएक्शन। और देखिए गटरमैन कोच रिएक्शन में होता क्या है? बेंजीन प्लस CO प्लस HCl प्लस AlCl3, इतनी चीज लो और यू विल गेट बेंजोल्डिहाइड। आपको बेंजोल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं यूज करना है तो आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, उसका नाम भी भाई गटरमैन है। उसका नाम है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें क्या यूज होता है? HCl प्लस HCl। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक है मामला। दोनों में बेंजीन कॉमन है, दोनों में HCl कॉमन है, AlCl3 कॉमन है, सिर्फ CO और HCl का डिफरेंस है। इसमें CO यूज हुआ है और उसमें HCl यूज हुआ है, बाकी प्रोडक्ट सेम, रिएक्टेंट सेम। तो कंफ्यूजन तो होना लाजमी है क्योंकि अगली तरफ भी बेंजीन और बेंजोल्डिहाइड है, राइट? तो याद रखिएगा गटरमैन कोच में को राइट। एक और बात है, एग्जामिनर आपसे कहे कि हाउ विल यू कन्वर्ट टॉलिन टू बेंजोल्डिहाइड डायरेक्टली। सो वी हैव
and one arrow. Zoom, 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 zoom. Itard की फ्लाइट पकड़ेंगे. कौन सी फ्लाइट स्टूडेंट्स? Itard flight. Oh, itard flight. See, itard. Itard. D 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 D. It's D. Itard reaction. इसमें क्या यूज करते हैं? Let me tell you. CrO2 Cl2. CrO2 Cl2 is chromic chloride. CCl4 H2O plus and heat. Okay, so you will get benzaldehyde directly. One more thing, अगर वो आपसे कहता है टॉलिन को डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में, ओ माय गॉड, यहाँ टॉलिन और वहाँ बेंजोइक एसिड, कैसे जाएं? जाना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. तो ओके चलते हैं. ये जा रहा है एरो. कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं बेंजोइक एसिड पे जा रहा हूँ. ओ हो, ये पहुंच गया. अब ऐसे कैसे पहुंच जाएगा भाई? कोई हवा है? कौन सा केमिकल यूज किए हो? तो केमिकल का नाम बताता हूं, लेकिन प्रोसेस का नाम है साइड चेन ऑक्सीडेशन. साइड चेन ऑक्सीडेशन. तो नाम है साइड चेन ऑक्सीडेशन. और केमिकल यूज करते हैं KMnO4 KOH हीट. KMnO4 KOH हीट. तो ये केमिकल नहीं मिले तो आप दूसरा केमिकल यूज कर सकते हैं, K2 Cr2O7 एसिडिक मीडियम. बस याद रखिएगा, इस बेंजीन में कितनी लंबी चेन लगी हो? 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, या यहां से लेके स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, सच्चा डेरा तक ही क्यों ना लगी हो. बस याद रखिएगा, इस कार्बन पे एक H होना कंपल्सरी है. एक H, यानी कि चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो, टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल पे आप कार्बन पे H नहीं होगा. तो हमेशा आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, क्या? बेंजोइक एसिड. साइड चेन ऑक्सीडेशन. देखिए भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, दिख तो रहा है, बट ठीक है, क्लियर है. सबको मैं दिखाई रहा हूँ, सामने सामने बना रहा हूँ, तो सबको विजिबिलिटी है, राइट? ओके, आपके सामने ही बनाया है. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो एनालिन है, एनालिन कुछ कह रहा है मुझसे कि मेरे बारे में बताओ. ओके, चलिए आप तुम्हारे बारे में बताते हैं. सी स्टूडेंट्स, इस एनालिन की रिएक्शन अगर हम करते हैं, NaNO2 dilute HCl से, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटाइजेशन. And we'll get benzene diethylene chloride. But this benzene diethylene chloride is not stable at room temperature. Ice cold solution में ठंडा बनानी पड़ेगी तो स्टेबल होगा. Zero to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेबल होता है. और इससे ज्यादा टेम्परेचर रखा, पहले सर का नाम बताओ. ओके, so this is prepared in situ. Situ means wherever it is required.
इतने में बर्बाद हो जाएगा, राइट। और सी इस बेंजीन डाइजेनिक क्लोराइड की अगर रिएक्शन करते हैं हम, HbF4 and heat, then we get fluorobenzene, and the name reaction of Bal-Schimann reaction. So what is this? Bal-Schimann. Bal कटवा के she बन गई man. It's just to remember. Bal-Schimann reaction. Bal-Schimann reaction. Bal-Schimann reaction. Now see students, fluorobenzene of Friedel-Crafts तो नहीं यूज करेंगे, हैलोजेनेशन, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजेनेशन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब बना लेते हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। तो एग्जामिनर पूछेगा हाउ विल यू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन, सो दिस इज द मेथड टू इंट्रोड्यूस फ्लोरीन इन बेंजीन, राइट। आर गेटिंग माय पॉइंट। स्वार्ट्ज रिएक्शन एलिफेटिक के लिए थी, वहां भी फ्लोरीन इंट्रोड्यूस होता था, लेकिन एरोमेटिक नहीं होता। तो याद रखिएगा बाल-स्टीमन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका, ट्रांसफरिंग तरीका, राइट। एनीवेज CuClHCl क्लोरोबेंजीन, नाम बताऊंगा रिएक्शन का भी। तीनों ही मेथड, चाहे क्लोरोबेंजीन हो, चाहे ब्रोमोबेंजीन हो या साइनोबेंजीन बनाने की, इनका नाम है सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड का मेयर, सैंड-मेयर रिएक्शन। लिखा हुआ सैंड-मेयर में यील्ड इज बेटर, बट किससे बेटर? किससे? क्योंकि एक और रिएक्शन उससे बेटर। These two reactions, copper powder, E was used. There was Cyprus. Here is copper powder. This is known as what? Gattermann reaction. So Gattermann तो यहाँ भी थे, बहुत सारे गटर हैं। Man, देखो कैसे कैसे man, Gattermann, Newman, जितने भी इंग्लिश फॉरेन राइटर्स में man है, अपने क्या हनुमान, गुरदास मान, बब्बू मान, क्या anyways. So these two are known as Gattermann reaction, right? भाई किसी और का कुछ मन है कुछ कहने का? हाँ, ये साइनोबेंजीन कह रहा मेरा बहुत मन है, मेरे बारे में बता दो। ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत पहले से जानते हैं साइनाइड अगर वाटर एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आ जाए तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर साइनाइड तो बेंजोल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और रिएक्शन का नाम है सौतेली मुर्गी। सौतेली मुर्गी, ये क्या है? सौतेली मुर्गी रिएक्शन। सौतेली मतलब स्टेप, मुर्गी मतलब हैन, स्टेप हैन,
Gibbons reduction. Okay, students, इतनी बात समझ में आ गई सबको? You got it? Now see students, इस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हो जाए, किससे हो जाए वो बात की बात पहले ये कह रहा है मुझे इसमें बेंजीन में कन्वर्ट कर दो. ओके, अब कैसे कन्वर्ट होगा? H3PO2, अगर हम H3PO2 से बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कर दें तो H3PO2 इज फॉस्फेनिक एसिड. व्हाट? फॉस्फेनिक एसिड. This phosphonic acid will oxidize to phosphonic acid. And benzene diazoxide chloride will convert to benzene. It is a redox reaction. Redox. हो सकता है एग्जामिनर आपको फॉस्फोनिक एसिड ना दे, उसकी जगह पे दूसरी कोई चीज दे सकता है. देखिए क्या दे सकता है. Ethyl alcohol, then that will convert into acetaldehyde and benzene diazoxide chloride will change to benzene. हो सकता है ये भी ना दे, फिर क्या देगा? वो ग्लूकोज दे दे, तो ग्लूकोज will change to gluconic acid and benzene diazoxide chloride will change to benzene. और एक बार तो उसने दे दिया स्टेनस क्लोराइड, आईआईटी में दे दिया स्टेनस क्लोराइड. तो स्टेनस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होके बनेगा स्टैलिक क्लोराइड और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड will change to this. बट एनसीईआरटी में दो ही दिए हैं, this one and this one. These two are given in NCERT. Are you getting my point, students? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है? मेरी वैसे तो कपलिंग रिएक्शन होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी वाली तो यहाँ लिखा दो मेमोरी चार्ट में. ओके, known as coupling reaction. अगर फिनॉल से रिएक्शन हो जाए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो ऑरेंज कलर डाई मिलेगी. और ये मीडियम इसका होता है स्लाइटली बेसिक मीडियम. नाम है इस डाई का पैरा हाइड्रोक्सी एसोबेंजीन. और इसकी रिएक्शन अगर एनालिन से हो जाए, जगह कम बची है लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं. pH is equal to 4.5 यानी कि slightly acidic medium.
then we'll get yellow color dye. What will you get? Yellow color dye. We'll get yellow color dye. Are you getting my point? सब देख लीजिए अच्छे से.